Mr. Sultan Allana and HBL for making this session possible, for bringing art into the public domain. Your contribution to Pakistani contemporary art is invaluable. Art has become a vehicle for communication, and its impact on people, society, and civilizations is a multifaceted one. For each viewer, it provides a different emotional experience and understanding, and it touches the soul. We have with us today two amazing women, intelligent, committed, passionate, sensitive, and courageous. Both work in a variety of mediums and techniques, traditional and modern, natural and man-made, with imagery deeply rooted in the Pakistani context. Urban folk, pop, social, and political, resulting in an exciting and diverse body of work. They both transport their audiences into another realm filled with hopes, dreams, and aspirations. Faiza Butt lives and works in London, and Adeela Suleman in Karachi. Today they will share with us their journey as national and internationally acclaimed artists and Pakistani women who have made their individual mark in the global contemporary art world. Faiza, I'm going to start with Faiza, and after that, because that's how we've structured it. Faiza's questions so that you can see Faiza's imagery, and then Adeela's. Faiza, you've been visiting Pakistan after how many years? Can you hear me? Can everyone hear me? On, wahan se on? Any technical support?
रहा है, जब ANP और पीपल्स पार्टी के हंगामे हो रहे थे तो हमारे घर पे हमला नहीं हुआ था क्योंकि वो बजाते हुए आते थे पोल्स, और तो लोगों ने, पुलिस ने आके अम्मी से पूछा कि आपके घर पे हमला क्यों नहीं हुआ, तो अम्मी ने कहा मेरी बेटी जो है वो पठान जो लोग हैं उनके सारे बच्चों को पढ़ाती है तो हमारे गार्डन में स्कूल लगता है. एंड आई थिंक व्हेन आई लेफ्ट इन दिस वैली दैट सेम थिंग स्टार्टेड हैपनिंग हियर. कि ये बच्चे आ जाते हैं, मेरे दरवाज़ा बजाते हैं, और क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा कि तुम इनको कहानियाँ सुनाया करो, तो मैंने ऐसे ही एक दिन जाते हुए बोल दिया कि मेरी अम्मी कह रही हैं कि मुझे तुम्हें कहानियाँ सुनानी चाहिए. तो सब आके 6 बजे मेरा दरवाज़ा बजाते हैं कि आज आप कौन सी, तो मुझे जाके ख़रीदनी पड़ी कहानियाँ, एंड वॉट एवर कहानियाँ दैट आई न्यू आई यूज्ड टू, बट दे कम एट 6 एंड दे लिसन टू स्टोरीज, और मैं किताब में से पढ़ के उनको सुनाती हूँ. तो आई हैव अ, सो एवरीबडी नोज इट्स अ वेरी होमली एनवायरनमेंट. औरतें, बच्चे, सब इस गली के अंदर कोई 500 बच्चे होंगे जो दर से दर भागते रहते हैं. I have a team of people. If you go next, this is my team. Half of them are not here, but I don't know whether you can see the names. All the names are here. I have. I think ज़रा बता दो कि मेटल रेबू से भी है और वुड वर्क भी है. तो जो साहब मेरे बराबर में बैठे हैं, जिन्होंने शॉल ऐसे डाली है, उनका नाम परवेज सिल्वेस्टर है, और उनका बेटा मेरे बराबर में बैठा हुआ है, वो रिसेंटली पास्ट अवे. और वो मेरे मॉडल थे इन दिस वैली में. सिंस देन ही हैज़ बिन विथ मी. इट्स बिन लाइक मोर देन 26-27 years now that he has been with me. एंड कासिम जो बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हुआ है, सेम गोज फॉर हिम कि कासिम मेरे साथ इन दिस वैली के दिनों से काम कर रहा है, और अब वो मेरे फुल टाइम सैलरी पेड स्टाफ है, स्टूडियो की टीम है. वेरी प्राउड टू. आई हैव a factory. So I have a section where the embroidery is happening. I have a section where metalwork is happening. I have a section where painting is happening. I have a section where woodwork is happening. And then I've, recently embarked upon a, project with my brother where we are looking at leather, जो सीते हैं और ज्वेलरी करते हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं. तो मैं इसको, जैसे पहले ज़माने में बुटेगा होता था या आर्टिलियर्स होते थे और आर्टिस्ट के स्टूडियो होते थे या मुगल मिनिएचर में कारखाने होते थे, आई थिंक ये मेरा छोटा सा कारखाना बनता जा रहा है. सो आई एम इंटरेस्टेड इन फाउंड स्टोरीज, what happens in the city. I'm interested in the found objects. I'm interested in found images. I'm interested in found material and found techniques. ये जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी पोस्ट कार्ड इमेज है जो कि मैंने चापर के ऊपर, क्लीवर के ऊपर किया है. And then this is a sword, actual sword, which has turned into a leaf, so it cannot. I hope that function. You all can see that it is a meat cleaver. There are screens on the sides also. Okay. Can we go next, please? Chup to nahi raha. Again, this is dance in your own blood. This is what we have experienced. Every day you would see how Karachi used to suffer. Things became better, a little better for us in the last year or so. But हम कराची के अंदर हमेशा 15, 20, 30 लोगों को मरते हुए एक्सपीरियंस करते थे. और ख़ास तौर पर 9/11 के बाद हम शहर में कहीं ना कहीं एक बम का धमाका ज़रूर होता था. एंड आई थिंक फॉर मी दीज लाइट्स दे बिकेम, बिकॉज ये बिल्कुल ब्लड की तरह नीचे गिरती हैं. सो आई मेड अ शैंडलियर आउट ऑफ देम. अगेन headless soldiers. I was looking at the history which Karachi has gone through, what Karachi is going through, but me being in the subcontinent, being a Muslim girl, what is our history, how much violence is there. And I did a whole series of headless soldiers where I was talking about the Mubarizun, जो 4 खलीफों की elite army थी. और मैंने उसमें कहा था कि no more Mubarizun. So there are no Mubarizun for us. So there is no one for us to save us right now. So these elite soldiers used to be sent by the Khalifas कि वो जाएं, जब कोई भी और चीज़ वर्क नहीं करती थी तो ये मुबारज़ुन भेजे जाते, जैसे बाशी बजूक होते थे, द क्रेज़ी हेड्स, राइट. सो उस तरीके से मुबारज़ुन भेजे जाते थे कि अब आप जाके जंग फतह करें. I made them headless simply because who killed who died first, I didn't want it to say that. And the moment a human being takes that decision that you want to kill someone, I think you yourself is dead already. So a dead person is killing
someone. So मेरे लिए सरों का हटाना और ये दिखाना कि दोनों ही मर चुके हैं एक साथ और दोनों एक दूसरे पे वार कर रहे हैं, that became the language that I used for a long time. I've been recently making these tapestry embroidery work. I've worked with my team. The imagery is of course coming out of Hamzanama and the Mughal miniature paintings. I've been looking at the violent images that have been documented in the Mughal miniature painting because that's the only pictorial history that we have of the subcontinent, that how things were. Or usme, this is a 17 feet long tapestry, hand embroidered applique work. Then we go next. Again, repulsive work, battle scenes, you know, made out of hand-beaten metal, copper and brass sheets. Adeela, have you been told any time, I'm sure you have, that why is there so much violence in your work? I think, Mrs. Ismail, मैं personally मेरी investigation 9/11 के साथ ज़्यादा, लेकिन I have experienced violence since childhood, right? I've been telling you that not in my personal life, but outside what was happening in the city. And we as Karachiites have experienced violence in innumerable ways. अभी परसों कोई बता रहा था, in fact, कि 1-2 साल की बच्ची barbecue night पे खाना खा रही थी और she passed away, you know. So हमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंश्योरेंस नेचुरल डेथ पे होगी, नॉट नागहानी मौतों पे, क्योंकि वो एक नॉवल्टी हमारे लिए बनता जा रहा है. हम हमेशा हमें यही डर लगा रहता है कि हम घर से बाहर निकलेंगे और फॉर डूइंग सम वेरी बिजार चोर्स कि आप यू नो ग्रॉसरीज लेने जा रहे हैं, यू मे नॉट रिटर्न. And we have seen that it's in so many stories, so many ways that all of us has experienced somehow or the other that violent act that this, and it's a beautiful city, and I don't want, but I don't know what it's like a curse that we have, that Yes. the city has. Yes. Can we go next? Yes. So I did this installation with 444 crows. This was called Harbinger of Death. Crows for me, एक कौवा मरता है, हज़ारों कौवे आ जाते हैं उसको मौन करने के लिए. And I thought कराची के अंदर 30 लोग मर जाते हैं और we continue to breathe, we continue to eat, we continue to party, we continue to do our daily chores. For me, this became, and there was a sound piece which I created with Abdullah Siddiqui, a young musician who works for Coke Studio as well. So we created the sound piece, and so this was like a tomb, a homage, और आप monuments बनाते हैं, तो the works have to be monumental. So जितने ज़्यादा लोग मरते हैं आप उतना बड़ा monument बनाते हैं. और I think it was that, and that also resonated with my 444 killings that But happened. you showed this in Birmingham. Yes, I showed this. So what was the reaction of the audience there, and how did the technicians, I mean, they must have had a nightmarish time trying to put up this huge this tower. So we were all involved. There was a huge team from the center, art center, who helped me to put up this work. And I created this structure there only. I didn't take it from Pakistan. The crows were ordered, and they all had a number. Like The crows were ordered from Amazon, from Scarecrow company, जो Halloween के लिए चीज़ें provide करते हैं. So I ordered, we found the company, right, signed off, and they are more raven-like. They're not the regular crows. But I think violence के हवाले से अगर आप बात करेंगी तो anyone in the world can relate to it. It's not something that it is only in this part of the world. We all have experienced violence now in some form or the other. And you have your work at the 2019 Biennale was destroyed. What have you learned from that experience? I think what I learned was, the basic message was that के कोई चीज़ जो already लोगों को मालूम है, जो चीज़ हुकूमत खुद कह रही है कि ये गलत है, जो चीज़ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कह रही है कि ये हुआ है, अगर आप उसकी तस्वीर कशी करें या आप उसका कोई मंजरनामा पेश करें, तो वो बर्दाश्त नहीं है. क्योंकि अगर आप 444 का नंबर लिखते हैं तो लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप 444 लाशें
बिछा दें या आप 444 पिलर्स खड़े कर दें, तो वो एक्चुअली आपको बताते हैं कि कितनी अमवात हुई हैं, और वो आपको एक शहर के हवाले से कि वो किस कदर वायलेंट शहर है उसकी अक्कासी करता है। एंड आई थिंक वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरी जो चीज़ मैंने लर्न की, द पावर आर्ट हैज़ इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, कि आप 2 घंटे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और विदिन 2 आवर्स ऑफ द ओपनिंग काम बंद हो गया, और ना सिर्फ बंद हुआ, उसको 3 दफ़ा तोड़ा गया, हथौड़े और औजार लाए गए जिससे उसको तोड़ा गया, और फिर ट्रक में भर के उसको कहीं जाके डंप कर दिया गया। तो ना सिर्फ उन्होंने वो वायलेंट एक्ट 444 लाशों के साथ किया, उन्होंने 444 लाशें दोबारा उन्होंने मारी और गिराई और उसको ले गए। तीसरी चीज़ जो मैंने लर्न की कि हमारे इदारे कितने कमज़ोर हैं और हमारे इदारे कितने इनसिक्योर हैं कि कोई अगर कोई किताब लिख दे या कोई एक फ़िल्म में कोई एक सीन हो या एक आर्टिस्ट कोई तस्वीर बना दे तो हमारी रियासत हिल जाती है, तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और वो उसकी एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ जाती है। सो जो रियासत इतने बड़े बड़े दावे करती है, जो इदारे इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, आपको पता चलता है कि वो सब दिखावे के दावे हैं। थैंक यू अदीला, थैंक यू वेरी मच। वी हैव अगर आपको बुरा ना लगे तो ये अभी नया काम में कुछ इमेजेस ज़रूर कर दूँ। ज़रूर। द न्यू वर्क दैट इज़ गोइंग टू दुबई, these are some of the plates. The violence continues, the blood fountain. How big are the plates? Big, they are, the 12 by plates are 16 inches, okay. Can we move forward, Asad, please? I'm sorry about the images. We haven't done the final photography, but that's it. Thank you so much, Adeela. That was हिला के रख देती हो तुम सारे आर्टिस्ट, तुम दोनों जो है ना वो इतना ज़्यादा एक सोच पैदा कर देते हैं। एंड आई एम श्योर हर किसी के दिमाग में इतनी सारी सोच जो हैं वो और पहलू जो हैं वो उजागर हुए हैं। मुझे बताइए कि आप लोग तैयार हैं सवाल पूछने के लिए? ठीक है मोहसिन, देख लिया मैंने, 15 मिनट हैं हमारे पास। सो वी हैव टू, आई बीन वेरी सॉर्ट ऑफ, मुझे घड़ी नंबर एक नज़र आ जाता है 15 मिनट और 10 मिनट का। तो वी विल स्टार्ट, वी हैव 15 मिनट्स फॉर आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स। अपना नाम बता दीजिए। आदाब, मैं मोहसिन सईद है एंड बहुत खुशी हो रही है, मेरी 2 बहुत फेवरेट आर्टिस्ट एक साथ बैठी हुई हैं। और शहनाज आपका तो क्या कहना। मेरा एक सवाल अदीला के लिए है और एक सवाल फ़ायज़ा के लिए। अदीला से सवाल ये है, चूँकि अभी उन्होंने कंक्लूड किया, राव अनवार जब बाहर आए तो आपके क्या जज्बात थे? जो मुबैना 444 लोगों के कातिल हैं वो बाहर आ गए बिल्कुल और बिल्कुल घूम रहे हैं, उस पे आपका क्या जज्बात थे व्हेन यू हर्ड द न्यूज़? एंड फ़ायज़ा से ये मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि आपने न्यूट की वेस्टर्न वो रिजेक्ट कर दी थी, मगर न्यूट तो हमारी भी तारीख़ का हिस्सा है, फ्रॉम सिम्बारा और कामासूत्रा और मुग़ल मिनिएचर में हमें भी दिखते हैं बहुत बारीक कपड़े, ऑलमोस्ट न्यूड। तो वो तो रिजेक्ट क्यों की? वो तो हमारी भी ट्रेडिशन है, हमारी ही ट्रेडिशन को आप आगे बढ़ा सकती थी इसी तरह जैसे कर रही हैं। ये मेरे 2 सवाल हैं। थैंक यू। ये शहर मोहसिन मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारा दिल तोड़ता है। एंड आई थिंक ये अभी रिसेंटली जो 3-4 जजमेंट्स आई हैं जिसमें बहुत सारे लोग छोड़े गए हैं, अदालतों से बाहर निकले, और हम सब इन स्टेट ऑफ शॉक हैं कि ये कैसे हुआ है। आई थिंक हमारा उस पर कोई काबू नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम मज़ीद काम बनाएं,
that's the language I know. मैं उसी में बात कर सकती हूँ. हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को बताएं कि दुख एक फैमिली जो, क्योंकि मैं नकीब के वालिद के साथ काम कर रही थी और काम का फोकस was pain, loss, you know, disappointment था. और I think this will continue. The new body of work also talks about what's happening in the world and in Karachi and in elsewhere in the world. So मुझे नहीं लगता कि इस पे मेरा कोई राय है, लेकिन हाँ दिल टूटता है, 1000 बार टूटता है और ये शहर बार बार कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े तरीक़ों से दिल को तोड़े. So, how do I answer it? दूसरा माइक दे दो. फाइजा आवाज नहीं आ रही है. It was quite an act of a political act to resist Western nude. Just the thing. So when I was resisting the Western nude. Hello. Can you hear me now? Thank you. This works? ये लग रही है. Can you hear me now? Can you hear me? So the thing is that when I resisted the Western history of nude, it was a political act because I was looked at from a very narrow angle as a Muslim female Pakistani artist. So it sounds like I had a very narrow-minded approach towards resisting the nude when nude exists in a grander heritage that we all own, which is the pre-Pakistan heritage. But the interesting thing is that I wasn't given that liberty. I wasn't looked at with that liberty. I was looked at from a very narrow angle, that you are a Muslim Pakistani artist. And you come here and you should learn from us. Slade School of Art, in my days, was a very macho space. And when I rejected nude, which were painted all around me in one form or the other, I was answering fire with fire in a way. So I totally agree with you if you erase recent histories. But having said that, female body as an object, as objectification of female body or an object to please or entertain is something I want to discuss in the first place. I'm not saying that the history, because history of nude exists in India and Pakistan, I should be adopting it because it's our pride heritage. I think even that is wrong. A goddess is always imagined through a male prism, through a male gaze, whether it's an Indian goddess or whether it's Nike or whether it's Olympia. If you look at the shapes she makes, if you look at her Lolita-ness, her youth, her prowess, men have imagined females as deities. So from Venus to Kim Kardashian, the whole objectification of female form does not interest me. Genderization of female form doesn't interest me. I don't feel it's to be celebrated because it goes against women. Hence, when I use a female form, I degenderize her. Fatima, and I'm going to introduce our guest today so that we can start the conversation. Our first guest is Matthew, who I can't seem to find right now. Hello. Here he comes. Hello. And I think let's have Peer Faraz Ali, also known as Piru Sai, first, and then I can tell you a little bit about both of our wonderful speakers today. So I hope all of you can hear me properly. Faraz, don't itna Faraz aisa na kare. ऐसा ना करें इतने दूर ना जाएं हमसे. Okay, so my name is Haya. I am a documentary filmmaker and I also teach at a university in Karachi. And I usually work with moving image and with video. So I'm really pleased to actually have two wonderful people who work in photography and who have a very
different, very distinct kind of an eye with respect to the image making that they do. Our first guest is, whoa, okay. Matthew was born in France and he has traveled all over the world for the National Geographic magazine. Matthew, your work has also appeared in Time magazine, I believe. And Matthew has been visiting Pakistan since 1999. He calls Pakistan the country of his heart, which I find a really lovely description. And we're going to talk a little bit with Matthew about his recent work, but also his photographic journey all along. Our second wonderful guest is Peer Faraz Ali. Peer Faraz Ali is commonly known in the Instagram world as Piru Sai, the Piru. Peer Faraz Ali is an adventure traveler and a photographer, and he's focused on showing people, cultures, and landscapes through his camera. His ultimate goal is to promote tourism and a positive image of Pakistan. He's a mountain lover, but also he's running a travel company these days. So thank you so much, both of you. Thank you. Is there some halchal? Somewhat? Is there a problem? No, I'd like them to connect to the sound because there's a short video from Piru that I'd like to show. So Okay. that's the only. So should we do that right now? Yeah, let's just see if it works. Okay. Thank you, Shukriya ji. All right, so we're just figuring out something. I love the negotiations that Okay. go into tech issues. USB-C. Okay, never mind. We'll play loud from the computer. The sound is not going to be possible. Okay. Go in, Masli. Thank you. Okay. It's okay. Do you want to introduce the video that you want to show first? No, I'll show it at the end. Okay, perfect. All right. So these issues will be taken care of as they emerge. Matthew, tell us first of all. Actually, talk to us even before we discuss how you came to Pakistan and when you started to come to Pakistan. Talk a little about how your photographic journey began, because I remember talking to you earlier on, and you said that when you were starting on as a photographer, you didn't really have a lot of people around you who were into photography. So talk a little about a younger version of Matthew and how it was like entering image making. Well, younger version would have been very doubtful and curious, but very doubtful of the possibility of living as a photographer, specifically in the field that I wanted to be doing photography, which is storytelling, telling stories, real life stories, as opposed to doing commercial work or wedding photography or something that potentially can bring more money, but I thought would be not so fulfilling for myself. So yeah, I was very doubtful, and early on, first I studied something completely different. And after 4 years of studying something that I wasn't feeling very comfortable with, I decided to try my luck at photography. And I did a very short degree in 1 year. And after that, I left on a long expedition on foot across Mongolia. As partly sponsored, I wrote a project proposal, and I got funding to go across Mongolia on foot. And then very shortly after that came Pakistan. And I came in 1999 in Pakistan as a voluntary teacher in a small village called Kachura near Skardu in Baltistan. म्यूज़ियम नेशनल म्यूज़ियम हार्डली हैव एनीथिंग, आप जाएँ तो जाले लगे हुए होते हैं उसके अंदर. सो लोगों ने अपने पर्सनल कलेक्शंस किए हैं जहाँ हम स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं. अगर आप गैलरीज देखें कि कितने यंग कलेक्टर्स बनते जा रहे हैं जो अब क्रिस्टल का वाज या शैंडलियर नहीं लटकाना चाहते हैं, अपनी घरों की दीवारों पे आर्ट लटकाना चाहते हैं. यू विल बी अमेज्ड. नॉट जस्ट दैट के जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को ख़रीद रहे हैं, देयर इज़ अ सेकंड टियर जो फ्रेम शॉप से जो आर्ट बिकता है, विच इज़ वे बिगर द नंबर देन द गैलरी का जो नंबर होता है. सो यू विल बी अमेज्ड के हाउ आर्ट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली, इफ वी मेक अ ग्राफ यू विल सर्टनली सी a rise. Adeela, I'm sorry I have to cut you, but we've run out of time. But just before that, I will take 1 minute to tell you a little anecdote which is very, very special. 1984 में फैज़ अहमद फैज़ के पास, 1984 you remember was a very bad time and a very distressful time, and especially for the women. And एक लोग आया करते थे उनसे मिलने के लिए, तो ख़वातीन भी आई उनके पास और कहने लगी फैज़ साहब कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है. तो उन्होंने बग़ैर झिझक के
सिर्फ 2 लफ्ज़ कहे, उन्होंने कहा पाकिस्तानी औरत। पाकिस्तानी औरतें, अब इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल हो सकता है?